कर दो. And likewise, I think Ruhullah, just to be on the safe side, I'll switch on for you as well. All right, let me just wait for a couple of minutes. हाँ हमजा, मैं तुमसे पूछ रहा था हॉक्स बे पर एज इन सिग्नल्स आ रहे होते हैं अपेरेंटली का. ओके, अपेरेंटली टेलीनॉर का 4G चलता है. मैंने एक्चुअली कभी टेलीनॉर यूज नहीं किया. मैंने हमेशा जोंग और क्या है वारिद ही है. हाँ वारिद यूज किया है. आई डोंट नो, वारिद हैज नाउ मर्ज्ड अप विद समथिंग नाउ. सो टेलीनॉर कभी मैंने एक्चुअली यूज किया ही नहीं है. बट आई फील हमजा कि 4G के ऊपर कनेक्शन बार बार ब्रेक हो जाता होगा. नहीं, अनलेस के टावर्स काफी करीब लगे हुए हो हॉक्स बे के, तब तो ठीक है. बट यार धूप नहीं है बहुत ज्यादा हमजा अभी, एज इन आज. टेलीनॉर अच्छा चल रहा है. ओके, ऑल राइट. सो तुम क्या बिरयानी शिरयानी सब लेकर गए हो अपने साथ? फुल खाने पीने का इंतजाम. ओके, फेयर इनफ. ऑल राइट यार. तो बेटा लास्ट वाली क्लास के अंदर नो फेज, रेगुलर क्लासेस जब अभी स्टार्ट हो जाएंगी ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर, फिजिकल क्लासेस. सो नो, आई डोंट प्लान ऑन यूजिंग अ प्रोजेक्टर बिकॉज बैठ के जो है ना ओवरवेट हो जाता है बंदा यार. सो आई प्लान टू यूज प्रॉपर वाला बोर्ड एंड यू गाइज विल हैव टू कॉपी डाउन द स्टफ. तो तुम लोगों को भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. एंड आई वुड लाइक टू यूज बोर्ड. इट हैज बीन क्वाइट सम टाइम और बोर्ड को यूज करने का मौका नहीं मिला. So whiteboard memories, yeah, exactly, Asma, you're right. Amna, I'll have to see. Amina, sorry, Mukarram, I'll have to see कि मैं हाइब्रिड चला सकता हूँ या नहीं, बिकॉज मैं तो प्लान कर रहा हूँ कि यार फुल फ्लैट सेंटर पर आकर क्लासेस ऑन कर लो. बहुत हो गया यार ये ऑनलाइन का काम. सो बस मास्क पहन लेना, सैनिटाइजर रख लेना और नमाजों में अपनी खैरियत की दुआएं कर लेना. सो आई एम काइंड ऑफ प्लानिंग के ऑनलाइन खत्म करके बस एज क्विकली एज पॉसिबल फिजिकल क्लासेस पे जंप कर जाएं. समझ में भी ज्यादा आता है, क्लास इंटरेक्शन भी ज्यादा हो जाती है. सो आई थिंक इट्स जस्ट अ मोर इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग. हाय इकरामा. Next week Saturday and college, Fala will have to wear mask if we are I think you'll still have to wear mask. I guess so. You should. Well, as in, मैं भी vaccinated हूँ लेकिन मैं भी खैर मास्क ही पहनूंगा. No, मुकर्रम, hybrid का हो नहीं सकेगा बेटा, because the entire purpose is going to be defeated if it's hybrid. So वो hybrid का और भी काम स्लो हो जाता है. और हाइब्रिड से तो मुझे लगता है कि वन वे ऑनलाइन फिर भी ज्यादा इफेक्टिव होता है. I've taken classes, hybrid classes in Nixer as well. I don't think ये इतने इफेक्टिव होते हैं. It should either be completely in person or it should be completely online. I guess hybrid doesn't serve any purpose. Anyways, चलो यार अब स्टार्ट करते हैं कुछ वर्किंग. Anyways, we'll see कि क्या करना है. मैं तो प्लान कर रहा हूँ कि यार फिजिकल क्लासेस एज क्विकली एज पॉसिबल हो जाए. चलो गाइस, सो प्रीवियस क्लास के अंदर जो मैंने सारे के सारे फॉर्मूला कराए थे ना, एंड आई नो तुम लोगों में से काफी लोगों को याद तो नहीं होंगे. सो मैं लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज वापस लिख लूं, और इनफैक्ट इस टॉपिक में और भी फॉर्मूलाज हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूलाज डन इन द प्रीवियस क्लास. यार आई थिंक इट वुड बी गुड आइडिया, ऑल्दो मैं ये अपलोड तो कर दूंगा, बट स्टिल अपने पास स्क्रीनशॉट भी अभी ले लो. द रीजन आई एम सेइंग स्क्रीनशॉट ले लो इज बिकॉज ये वाले फॉर्मूलाज अभी यूज भी करने पड़ेंगे. सो एटलीस्ट आपके पास होंगे ना, सो आप रिव्यू कर लोगे. So let me complete them. This was the basic formula. Acceleration is equal to minus omega square x. Okay, then we did a formula for displacement as a function of time. This was the first result.
इसके अंदर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हमने लिखा था एज प्लस माइनस एक्स नॉट। मैं सिंबल्स भी सारे अभी लिख दूंगा वापस। Then the second result was for velocity. And maximum velocity was given as plus minus x naught omega. Then the third result was for acceleration. And maximum acceleration is given as plus minus x naught omega square. Although you have to remember all of these results, but आज वाली क्लास में, since मुझे आगे थ्योरी करानी है ना, so आज वाली क्लास में ये वाले रिजल्ट्स मुझे ज्यादा यूज करने हैं। सो लर्न तो आप सारे कर लीजिएगा, लेकिन जिन तीनों को मैंने हाईलाइट किया है ना, ये मुझे प्रीडोमिनेटली आज यूज करने हैं। देखते हैं शायान क्या करेंगे। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि अक्टूबर नवंबर के पेपर्स में क्या करेंगे। सो लेट्स सी क्या होगा। अनुशेष सिंह, प्लीज कंटिन्यू दी ऑनलाइन क्लासेस एज इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा यार, एक काम कर लेना ना, एक दो दिन सोच लो तसल्ली से, फिर मुझे बता देना। सो व्हाट्सएप पर ही मुझे बता देना फाइनली। यार आपस में कन्वर्सेशन कर लेना, एक दूसरे से लड़ झगड़ लेना। एंड रूहुल्ला, मुझे फाइनली तुम बता देना यार क्या सिलसिला है। सो आई वुड वांट कि फिजिकल क्लासेस हो जाए, बट इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू विद ऑनलाइन क्लासेस तो बता देना। सो यू गाइस डिसाइड ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, और फिर रूहुल्ला जस्ट कीप अ हेड काउंट के फाइनली क्या डिसाइड होता है यार, एंड आई विल फॉलो अकॉर्डिंगली। ठीक है। सो गाइज, तुम लोग रूहुल्ला के तक कम्युनिकेट करते जाना। रूहुल्ला यहाँ मुझे अलग से कम्युनिकेट कर देगा, फिर इवेंचुअली डिसाइड कर लेंगे। तो कर लेना डिसाइड जो भी हो। माय सजेशन वुड बी, आई वुड प्रेफर फिजिकल क्लासेस। बहुत टाइम हो गया यार, क्लासरूम की शक्ल नहीं देखी। बट नॉनदलेस सी फॉर योरसेल्फ, और फाइनली एक जजमेंट कॉल कर लेना, उसके हिसाब से डिसाइड कर लूंगा। चलो गाइज, एनीवेज, हाँ, ठीक है तैमिया, तुम लोग आपस में कर लेना डिसाइड, नो वरीज। जो बोलोगे वो कर लूंगा यार। ठीक है। मेरी इफ इट गेट्स इवन आउट, इक्वल इन नंबर्स और व्हाटएवर, मेरा वोट इज फॉर फिजिकल क्लासेस, तो मुझे भी एक कैंडिडेट के तौर पर इंक्लूड कर देना। एंड आई गेस माइन शुड काउंट एज 5 वोट्स एज अपोज टू 1 वोट फॉर ईच ऑफ यू। सो आई थिंक मेरे 4 या 5 तो होने चाहिए। सो मेरे 5 वोट्स काइंड ऑफ फिजिकल के लिए डाल देना। ओके, एनीवे, तो एज आई वाज सेइंग यार, मुझे आज वाली क्लास के अंदर ये फॉर्मूला जरा ज्यादा यूज करना है, तो थोड़ा सा इसको याद रख लो आप। मैं सिंबल्स मेंशन कर लूं। A was acceleration, V was velocity, X was displacement, X naught was amplitude, omega was angular frequency. So यार, अब जो नेक्स्ट वाले फॉर्मूलाज की वर्किंग करनी है ना, एंड देयर इज अ लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज। सो दिस इज जो मैं आज वाली क्लास की वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग the velocity of an object. मैं सिंबल्स भी साथ साथ लिख लूं। So expression for calculating the velocity v of an object when the displacement x is given. So first of all, let's try to understand heading का मतलब क्या है. So let me draw a diagram for you for your understanding. और इसके बाद मैं formula लिख दूंगा.
So imagine if there is a pendulum given to you, just a diagrammatic representation. तो इमेजिन करो कि यार आपके पास ये इंफॉर्मेशन है that the time period for this pendulum is 4 seconds. अच्छा, सेकंड इंफॉर्मेशन ये है कि the amplitude x naught is 12 centimeters. So let me mark that for you. So amplitude refers to the maximum displacement from the mean position. So imagine that is given as 12 centimeters. Now, if the question says calculate the velocity of the pendulum when it is at a point P, और मैं डायग्राम पे पॉइंट P ड्रॉ कर देता हूं. So this is the point. I'm labeling this as P. And the question wants you कि आपको इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. सो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया. And the displacement at this point is given as 4 centimeters. जगह नहीं है ना, तो just bear with me. थोड़ा सा छोटा करके मैंने लिख लिया है. So in a question like this, when you are expected to calculate the velocity of an object when the displacement x is given. ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं और फिर इसको अप्लाई कर लेते हैं. तो दिस इज द रिलेशनशिप. द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला इज नॉट रिक्वायर्ड. सो आई जस्ट डायरेक्टली राइट डाउन द फॉर्मूला और फिर इसको अप्लाई कर लेते हैं. None of these formulas are given to you in the exams. So ये kind of तकरीबन सारे results आपको learn करने पड़ेंगे. All the ones जो मैंने beginning से लिखे हैं. So first of all, have a look at the formula. Then let's apply the formula to work out the answer. So guys, पहला काम आपको ये करना चाहिए कि remember omega can be written as 2 pi upon t. Time period is 4 seconds now. So omega can be written as 2 pi upon 4. So I'll replace that value. Yeah, if anybody has a calculator now, तो please जरा figure out कर लेना. Now, x naught is the amplitude. So guys, आपको amplitude diagram से भी मिल जाएगा. मैंने circle कर लिया है. और आपको information भी given है, whichever way it works out for you. That's given as 12 centimeters. Convert कर दीजिएगा. So 0.12. And x denotes the displacement of the particle at the given point. So the given point was P, and the displacement of the particle at the given point was 4 centimeters. So that can be replaced. So x naught is the amplitude
and x is the displacement of the particle at the given instant. Before I get the answer now, students generally uh, भूल जाते हैं, तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ ये स्टेटमेंट वापस लिख लूं कि x naught in the formula is the amplitude and x is the displacement at the instant when velocity is to be obtained. And let me also mention that displacement is always measured from the mean position. Now, why is this last statement relevant for me? So I'll explain that to you in a moment. First of all, let's see velocity का result कितना आ रहा है. So मेरी screen पर मैं round off करके लिख रहा हूँ. It's coming out to be plus minus 0.18. The first question you should be asking is, okay, sir, why plus minus? What is the significance of plus and minus? So I'm sure you would appreciate the plus and minus refers to the direction because velocity is vector. So what do I mean by direction? So look at the diagram to recognize one thing. When the particle passes the point P, you would appreciate that the particle is going to cross the point P twice. दो दफा cross करेगा ना, once as it goes to the right and then eventually as it goes to the left. So at every point, the particle crosses that point twice, once as it goes one way and then again as it comes the other way. So that explains the significance of the plus and the minus sign. ठीक है, so plus and minus refers to the two directions in which the particle moves through each point. Like in this case, if I look at the point P, the particle at one moment is going to travel to the right of P, and then after some time later, the particle is going to travel to the left of P. So that explains the plus and the minus. एक चीज तो ये हो गई. नेक्स्ट चीज ये, और आई थिंक ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, कि why was I so keen in mentioning the fact that displacement is always measured from the mean position? ये लिखना क्यों जरूरी था? Because in the exams, time and again, they have done one thing. They give the exact same question, the one that I gave you right now. Usually वो यही वाला question देते हैं. It doesn't have to be a pendulum, it can be any oscillating body. And to trick you, they will give you the time period. They will give you the amplitude. They will give you the position of the particle as well. So kind of a very, very similar diagram to the one that was given earlier on. Only this time, to trick you, they will give you the distance which I'm labeling right now. So अगर वो आपको ये 8 सेंटीमीटर्स दे दें, तो प्लीज इस बात को recognize कीजिएगा. If the question is asking you, calculate the velocity at P. So when you're using the formula which I just wrote, then do remember the fact that x represents displacement measured from the mean position
That is, do not take x as 8. यही एक mistake होती है. Taking 8 would be wrong. Rather, x should be 12 minus 8, that is 4 centimeters. So hence मैंने ये mean position वाले term पे थोड़ा सा emphasize किया था. आपका जो result बनेगा, this is how it would look like. So omega is 2 pi upon t, time is 4. Amplitude x naught, that is 12. Convert कर लीजिएगा, so 0.12. And x measured from the mean position, so it should not be 8, rather it should be 12 minus 8, which is 4. So hence, this is how the working would happen. ठीक है, simplify तो आप कर लोगे, result आपका figure out करके आ जाएगा. All right, इब्राहिम ने लिखा हुआ है, can you go up for 1 minute? हाँ इब्राहिम, एक सेकंड रुकना. हाँ, मैं पहले ये आंसर कॉपी कर लूं, फिर ऊपर शिफ्ट कर जाता हूं. All right, so इब्राहिम, this was the starting work यार. मुझे बता देना कि मुझे कितना शिफ्ट करना है. ठीक है. So guys, अब basically all together ये सारे formulas आ गए. First result आ गया, second result, third result, fourth result, fifth, sixth and seventh. ये 7 results आ गए थे. और इसके बाद ये एक और फॉर्मूला आ गया. So I guess 8 results in total अभी तक. और मैं आई थिंक नंबरिंग भी कर देता हूं. It isn't such a bad idea कि आपको अगर लिखने हो तो इन रिजल्ट्स को अलग से लिख दीजिएगा. वैसे इन टुडेज क्लास मैं सबसे ज्यादा ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, टाइम एंड अगेन. सो थोड़ी देर के लिए, नेक्स्ट 15-20 मिनट्स के लिए प्लीज ये वेलोसिटी वाला रिजल्ट याद रख लेना, क्योंकि ये मुझे टाइम एंड अगेन यूज करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन. तो ये जो इक्वेशन है ना, इसके ग्राफ की कंपाइलेशन कैसे होगी ना, अब वो देख लेते हैं. अच्छा, डू रिमेंबर प्रीवियस वाली सारी इक्वेशन के ग्राफ्स मैंने लास्ट क्लास में बना दिए थे. सो इफ यू वांट आई कैन शो देम टू यू एज वेल. इन सब के ग्राफ्स मैंने प्रीवियस क्लासेस में बना भी दिए थे. सही. सो अब जो एक इक्वेशन हमने अभी करी है ना, दैट इज इक्वेशन नंबर 8. इसका ग्राफ बच गया है ना, सो ये भी मैं साथ साथ कंस्ट्रक्ट कर लूं. लुकिंग एट दिस इक्वेशन, इसका ग्राफ थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है बिकॉज ऑफ द स्क्वायर फंक्शन. सो कैसे बनाना है इसका ग्राफ, देयर इज एन इजी वे ऑफ इट, और आई थिंक आप याद भी रख लोगे. इक्वेशन जरा एक नजर देख लो ताकि मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े. देन आई विल रीराइट दिस इक्वेशन and we'll plot a graph of this function. So in the heading, I'll say graph of how velocity v
varies with displacement x. Now, looking at the equation and trying to figure out the graph, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा. Because as I said, it's a quadratic equation. Judgment करना मुश्किल हो जाता है. So an easier way to construct a graph for this equation would be कि आप एक पेंडुलम का पहले बिल्कुल बेसिक सा डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लो. Just a simplistic diagram showing the pendulum at the extreme positions and at the mean position. This would be fine. On the basis of this diagram, let's see how can we construct the graph of velocity against displacement. So looking at the pendulum, I think you would appreciate three things. देखो मैं क्या लिख रहा हूँ. For the point labeled as A, which is the extreme position, without a doubt, each and every one of you would agree the extreme position पे the particle comes to rest. और rest का मतलब है कि I can say that at both the extreme positions A and B, when the particle comes to rest, its velocity is going to be 0. So मैं दोनों जगह ये लिख सकता हूँ. For one point I can say x is equal to plus x naught, positive amplitude. For the other point I can say x is equal to minus x naught, negative amplitude. So positive amplitude on one side, negative on the other side. So at both of these positions, when x is positive x naught or when x is negative x naught, since the particle is at rest, we should expect the velocity at both of these points to be 0. इसका technically मतलब है I have 2 points to work around with. पहले मैं इन दोनों red वाले points का graph बना देता हूँ. So when displacement is positive x naught, velocity will be 0. तो एक point आ गया. When displacement is negative x naught, again velocity will be 0. 2 points आ गए. तो मेरे पास 2 points तो आ गए graph बनाने के लिए. These are the two extreme positions. What's left? So the mean position is left. So what do we know about the mean position? I know for a fact mean position पे displacement will be 0. इसको तो कोई doubt नहीं कर सकता. And remember, O levels के अंदर you were taught कि mean position पे the particle's velocity is maximum. So if you can relate to the statement which I just said, that when a pendulum passes through its mean position, its velocity is always maximum. So look, that maximum velocity का answer मेरे पास already है, जिसको मैं green marker से भी circle कर दूंगा. So I know at the mean position, the velocity will be maximum. And I have the value maximum velocity is plus minus x naught omega. So मैं इसको copy down कर लेता हूँ, if you allow me. Plus minus का क्या मतलब है? So when displacement will be 0, the velocity will be positive.
x naught omega, or the velocity will be negative x naught omega. So 2 points above and below the x-axis. अब नोट करो यार, I have literally quite a few points. 4 points तो आ गए, and 4 points are good enough for me to construct the graph. Next question, which I don't think should be a question, but students पूछते हैं कि sir, should it be a straight line, should it be a curve, or whatever. So guys, it's a quadratic equation. Have a look. Square है ना? So it cannot be a straight line. Has to be a curve. 4 points, at least for me, are good enough to construct a curve. Some students end up saying, so it's a circle. My suggestion would be a circle के बजाय circle has all 4 points equal. However, ellipse बोलना या oval shape बोलना ज्यादा सही है. मुझे circle में थोड़ा सा doubt ये होता है कि not all 4 points are equal. Rather, the point on the right is equal to the point on the left, and the point above is equal to the point below. So all 4 are not equal. The 2 red are equal and the 2 green are equal. So ellipse बोलना या oval shape बोलना kind of ज़्यादा sensible है as opposed to calling it a circle, because circle के लिए all 4 values should be equal. Whereas as in this case, you can see left and right are equal. Left and right are equal, and up and down are equal. So not all 4 are equal. Left is identical to right, up is identical to down. So elliptical shape kind of works for me. Mohammed Ibrahim ने पूछा है, when will maximum velocity be positive? When will it be negative? So Ibrahim, इसका simple सा answer ये है कि when the particle passes the mean position, when it goes in one direction, हम उसको positive बोल देंगे. For example, as it goes to the right, we can call it positive, and as it goes to the left, we can call it negative. Usually यही करते हैं Ibrahim. Right taken as positive makes sense. Left taken as negative. So one will be positive and the other one will be negative, and that is your discretion. So positive किसको बोलोगे, negative किसको बोलोगे, वो literally तुम्हारी choice है. Usually going through the right, positive हो जाएगा, and then moving towards the left, negative हो जाएगा. But it can be the other way around as well. No hard and fast rule. All right. Next question जो students पूछते हैं ना, and I think that kind of makes sense. आप ही suggest कर देना कि what if the examiner asks you कि आपको velocity का ग्राफ बनाने के बजाय, if they ask you कि आपको ग्राफ बनाना है speed लिखा है अब versus displacement. So top वाला ग्राफ को देखकर I'm sure you can all appreciate speed is a scalar quantity. So I don't need the negative axis. जो ग्राफ बना हुआ था ना, थोड़ा सा वो reduce down हो जाएगा. So instead of making a complete elliptical shape, it should be half of an ellipse, because you can't have negative speed. The values will remain the same. Shape आपका reduce करके आधा हो जाएगा. Somewhat like this. मैथ वाले स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ऊपर वाले ग्राफ का आपने मॉड्यूलस कर दिया. सो अगेन, जिनको मैथ्स नहीं आती आप प्लीज मेरे स्टेटमेंट को इग्नोर कर दें. जिनको मैथ्स आती हैं उनको समझ में आ गया होगा.
मैं नॉनदलेस रिपीट नहीं कर रहा, इसको इरेज कर रहा हूं. मूविंग ऑन. व्हाट इफ द क्वेश्चन वाज कि इसका ग्राफ बनाना है? जल्दी से सजेशन दे दो. अब आई एम चेंजिंग द डिस्प्लेसमेंट इनटू द टर्म डिस्टेंस. So now both speed and distance are scalars. सब ग्राफ आपका और भी रिड्यूस हो जाएगा. सो फर्दर आधा हो जाएगा ना. सो बस सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा. काइंड ऑफ लाइक दिस. ठीक है. सो द सिचुएशन विल डिसाइड एग्जैक्टली हाउ मच ऑफ अ ग्राफ नीड्स टू बी कंस्ट्रक्टेड. सो अगर आपने सीक्वेंस देखा हो ना कि मैं किस तरीके से चीजों को पढ़ा रहा हूँ. हम फॉर्मूलाज कर रहे हैं, फिर हम ग्राफ्स कर रहे हैं. हम एक एक करके फॉर्मूलाज करते जा रहे हैं और उसके साथ साथ ग्राफ्स भी करते जा रहे हैं. जी. अब फर्दर आगे. अब नेक्स्ट चीज ये करनी है. एक्सप्रेशन एंड ग्राफ्स सेम थिंग काइंड ऑफ फॉलोज. तो अब थोड़े से और फॉर्मूलाज करेंगे. 8 फॉर्मूलाज तो पहले ही हो गए. अब काइंड ऑफ नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th फॉर्मूलाज आ जाएंगे. बट डोंट वरी. सारे फॉर्मूलाज को टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास येलो मार्कर से हाईलाइट कर दूंगा. सो और नंदिया नंबरिंग कर दूंगा, वट एवर सीम्स अप्रोप्रिएट फॉर यू. तो आपको याद रखना आसान हो जाएगा. सो नाउ एक्सप्रेशंस एंड ग्राफ्स फॉर काइनेटिक एनर्जी, potential energy, and total energy for a particle of mass m performing simple harmonic motion. All right. काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट करना सबसे आसान है. सो पहले let me work out general formula for kinetic energy. Yeah, the term general formula means I can use this formula to calculate kinetic energy at any point. अच्छा, इसकी 2 स्टेप्स की डेरिवेशन है, बट नॉट रिक्वायर्ड. सो डायरेक्ट आंसर लर्न कर लेना. मैं मेंशन कर देता हूं. Although it's a two-step derivation, so मैं लिख रहा हूं, but it's not required. So you may ignore it if you don't want. So guys, kinetic energy का basic formula बन जाएगा half mv square. और velocity का आंसर हमने अभी obtain किया था ऊपर. So if you want, I can scroll back. Otherwise, if you trust me, so this was the answer. मैं quickly आपको show भी कर देता हूं. But I am hoping against hope कि तुम्हें याद होगा आप लोगों को. जल्दी show कर दूं. है ना, ये रहा. अभी किया था. सही है. So using that velocity का result, let me replace. मेरे पास kinetic energy का आंसर आ जाएगा. As I said, it's a two-step working, but derivation is not required. So please इसको ignore कर देना. और जो मैं final answer लिख रहा हूँ ना, that's the only answer that is needed.
चेक कर लो। बॉक्स बना देता हूँ। So the formula is implying that you need to know four things in order for you to calculate kinetic energy at any point. तो कौन सी चार चीजें पता होनी चाहिए? तो यार आपको ऑब्जेक्ट का मास पता होना चाहिए. Then you need to know the time period so that omega can be obtained. You need to know the amplitude of oscillation, and you need to know the displacement at which you are trying to find out the kinetic energy. ठीक है, so you need to know mass, time period, ताकि omega आ जाए, amplitude, so that's x naught, and displacement x at the moment when you are trying to obtain the kinetic energy. So ये चार चीजें होनी चाहिए. However, if I ask you, what will be the formula for maximum kinetic energy? Wouldn't you all agree? Maximum kinetic energy के लिए I need to plug in maximum speed. And again, let me go back to the top. If you guys trust me once again, this was the formula for maximum speed. If not, let me just quickly go back. सही है, रिप्लेस कर रहा हूं. वर्किंग ज्यादा मुश्किल नहीं. इट्स जस्ट दैट कि यार फॉर्मूलाज इतने सारे हैं ना, इट काइंड ऑफ गेट्स अ न्यूसेंस. बट वर्किंग वैसे बाय इटसेल्फ सिंपल है. सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी is given by the result half m omega square x naught square. So दो रिजल्ट्स आ गए. हाँ, तो you might say कि सर दोनों रिजल्ट्स में फर्क क्या है? So guys, when I say general formula, that means you can use this result to calculate kinetic energy at any point. And of course, when I say maximum, that just means maximum. I can't define anything further than that. So kinetic energy के तो results आ गए. ओके, यार रूहुल्ला का टेक्स्ट पढ़ लो गाइस. उसने एवरीवन पे सेट करके लिख दिया है. प्लीज तुम लोग एक नजर देख लो. तो रूहुल्ला टेक्स्ट शुड बी विजिबल टू यू गाइस. थैंक यू रूहुल्ला भाई. सो प्लीज डू लेट हिम नो. रूहुल्ला फिर मुझे फाइनली कल किसी वक्त बता देना यार. सही है. ओके, अब भाई इक्वेशन तो आ गई. इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सो काइनेटिक एनर्जी के रिजल्ट्स आ गए. सो हाउ वुड a graph of kinetic energy versus displacement look like? Again, graph is simple. And for graph, don't look at the formulas. Literally, you don't need to look at the formulas. जितना कम देखोगे अच्छा है. वैसे ही अजीब अजीब फॉर्मूलाज हैं. तो फॉर्मूले के बजाय पेंडुलम को देखो. इसको देख के दिल को सुकून भी मिलता है और ग्राफ जल्दी से फिगर आउट भी हो जाता है. आई एम श्योर यू वुड अग्री at the extreme positions. When displacement is positive x naught and when the displacement is negative x naught.
At both extreme positions, the particle is at rest. So at both extreme positions, the velocity will be 0. तो 2 पॉइंट्स तो आ गए। तो ग्राफ बनाने के लिए ये पेंडुलम की शक्ल काफी feasible रहती है as opposed to looking at the formulas. So I have two values to work around with. 2 points तो आ गए ना, let's just get started. So kinetic energy against displacement. So guys, the 2 points that I have, I'm marking those 2 points. And at both these points, kinetic energy is 0. So 2 तो आ गए, है ना? हमजा ने सही लिखा हुआ है। So हमजा ने लिखा है speed 0, therefore kinetic energy 0. Fair enough. तो guys, मैं भी लिख देता हूँ। Good यार हमजा, signals पूरे आ रहे हैं तुम्हारे पास। I had a feeling तुम 2-3 दफा डिस्कनेक्ट तो हो गए, लेकिन I was wrong. मतलब टेलीनॉर हॉक्सबे में तो अच्छा काम करता है। I don't know about the rest of the city. ना यार, ये बीच वाली एक पोजीशन रह गई है ना भाई, इसका क्या करें? तो तुम लोगों को ऑलरेडी पता है बीच में स्पीड मैक्सिमम थी, तो यू वुडंट आर्ग्यू इफ आई विल से कि अगर मेन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम है तो भाई काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। और अगर आपको मेरा स्टेटमेंट अच्छा लग रहा है तो जरा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखो ऊपर, नजर आ रही होगी। मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। अब ड्रॉ कर रहा हूं। दिस वाज द वैल्यू। मैं दोबारा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लूं, आप खुश हो जाएंगे। हो सके तो याद ही कर लो यार। I think you would all be in agreement that the graph looks pretty much similar to the speed wala graph, because zahir hai kinetic energy is dependent on the speed. I'm on my way back. We are going through Madipur Road. Okay. I think traffic बहुत होगा Hamza. I have a feeling. Maybe I'm wrong because last time जब मैं माड़ीपुर रोड पे गया था, एक तो वो रोड है भी बहुत खराब। I'm मैं एक्वाफोबिक हूँ, तो I certainly मेरे घर में मेरी सबके साथ लड़ाई हो रही होती है। मैं कभी भी पानी वानी के पास नहीं जाता। So last time a group of teachers took me, तो वो सर इमरान ने अ, बिरयानी बनाई थी पूरी देग, और वो घर पे आके मुझे मजबूर करके लेके गए थे कि भाई चलो 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 फ्रेंच बीच के ऊपर। एक तो मुझे पानी से वैसे ही वहशत होती है, तो वो बिरयानी के चक्कर में मैं चला गया था। सो दैट वाज द ओनली टाइम जब वो माड़ीपुर वाला रोड मैंने ड्राइव करते हुए देखा था। उस वक्त तो काफी खराब था। आई डोंट नो अब कैसा है। ओके, रश नहीं है आज। गुड। सो गाइस, ये तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया, और आई एम श्योर आपको देख के ग्राफ याद रह जाना चाहिए। फॉर्मूलाज याद रहे ना रहे, तो ग्राफ याद रह जाएगा। अच्छा, फॉर्मूलाज के लिए एज ए सेड मैं नंबरिंग करता जाऊंगा। तो यार 8 फॉर्मूलाज ऊपर हो गए थे। ये 9th हो जाएगा, ये 10th हो जाएगा। सही। इब्राहिम ने पूछा है व्हाई इज स्पीड ऑलवेज मैक्सिमम एट द मेन पोजीशन। इब्राहिम, जब पेंडुलम फॉल करता है फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन एंड गोज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, एज इट फॉल्स, सो डोंट यू रिमेंबर ओ लेवल से पढ़ते थे कि बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एज द पेंडुलम फॉल्स एंड अप्रोचेस द मेन पोजीशन, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का तो लॉस हो रहा होगा ना। So Ibrahim, if you are agreeing with the fact that there will be a loss in potential, then surely you would also agree that as a consequence there will be a gain in kinetic energy, beta. And that gain in kinetic energy allows the speed to be maximum at the mean position.
सो सही है इब्राहिम? तो मैं ये एरो मिटा दूं यार। ठीक है, सो ऑल राइट, फेयर इनफ। अच्छा, 10 फॉर्मूलाज हो गए, हाँ। अब वापस हेडिंग पे जाते हैं। तो अब काइनेटिक एनर्जी के बाद पोटेंशियल एनर्जी के भी आंसर्स निकालने हैं, और फिर इसके बाद टोटल एनर्जी। सिंपल है, हाँ, लेकिन है ज्यादा, है सिंपल। तो गाइस, पोटेंशियल के लिए और टोटल एनर्जी के लिए भी रिजल्ट्स लिखने हैं। व्हाट आई डू फर्स्ट इज कि मैं लिख देता हूं सिर्फ जनरल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अभी फिलअप नहीं कर रहा, आपसे मेहनत करवाऊंगा। फिर इसके साथ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये बाकी रह गए हैं। और इसके साथ बेटा टोटल एनर्जी। जब मैं टोटल एनर्जी लिखता हूं ना, तो कोई ना कोई स्टूडेंट ये कहता है, सर आपने टोटल एनर्जी के साथ व्हाई डिडंट यू राइट जनरल फॉर्मूला, और व्हाई डिडंट यू राइट द टर्म मैक्सिमम? सो गाइस, कॉमन सेंस है। Law of conservation of energy says total energy always remains constant. So something which doesn't change, uske liye there is no point in me writing general formula and no point in writing maximum. So total energy ke liye there is just going to be one formula because it remains constant. So general या maximum लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. One formula will do the job. हाँ, kinetic and potential keeps changing ना, so इसीलिए उसके लिए लिखना जरूरी होता है कि जनरल फॉर्मूला या मैक्सिमम, but total energy doesn't change based on law of conservation of energy, it remains constant. So इसका बस एक ही रिजल्ट होगा। अब क्या क्या रिजल्ट्स होंगे ना, ये मैंने खाली खाली जगह आपके लिए छोड़ी हैं। पहला काम ये कर लेते हैं गाइस, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना देते हैं। तो फॉर्मूलाज बाद में देखेंगे, ये तीनों फॉर्मूलाज अभी करने हैं, 5 मिनट में हो जाएंगे। लेट्स नॉट वरी, अभी इनको नहीं कर रहा, पहले ग्राफ बना दो। अब वुड यू ऑल अग्री काइनेटिक का ग्राफ तो बना हुआ है, सो पोटेंशियल का ग्राफ डेफिनेटली काइनेटिक का बिल्कुल फ्लिप हो जाएगा, है ना? बिकॉज रिमेंबर, फ्लिप इसलिए कह रहा हूं कि लॉस इन वन रिजल्ट्स इन गेन इन द अदर वन। सो अगर काइनेटिक का ये ब्लैक कलर का ग्राफ बना हुआ है, तो पोटेंशियल का ग्राफ अगर मैं ब्लू कलर से बना दूं, सो बिल्कुल इसका उल्टा होना चाहिए। बहुत खूबसूरत तो नहीं बन रहा, बट आई गेस यू कैन ऑल मैनेज। बिल्कुल फ्लिप हो गया। एंड द रीजन फॉर द फ्लिपिंग इफेक्ट इज kinetic changes to potential and vice versa. So gain in one results in loss in the other one. So इसीलिए if you know kinetic, potential should be the exact reverse. इससे एक फायदा और भी हो गया, आई एम श्योर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आपको नजर आ रही होगी, एंड आई थिंक यू वुड एग्री दिस इज द सेम एज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कुछ लोग जरा ओके करोगे दैट फ्रॉम द ब्लू ग्राफ you should be okay with the fact that the maximum potential energy is the same exact answer which was the answer for maximum kinetic energy. सही है ना? सो वन मोर फॉर्म, वन लेस फॉर्मूला टू डील विथ, इसका भी आंसर आ गया। सो ये तो एरो वेरो सब मिटाता हूं, अजीब लग रहा है, और बस यही लिख देता हूं। सो ग्राफ से, ब्लू कलर के ग्राफ से आई डोंट थिंक यू कैन गो रॉन्ग।
So potential की maximum value is the same as जो kinetic की maximum value थी. Fair enough. किसी को डाउट हो ना तो प्लीज लिखते जाना. तो चलें जी, एक आंसर और आ गया. मैं फिर से एरो बना दूं. So maximum potential is the same result as the one that was for maximum kinetic. ठीक है, because they are both at the same level. All right जी. अब what if I ask you टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाओ. फॉर्मूला नहीं पूछ रहा, ग्राफ पूछ रहा हूं. Would you agree kinetic and potential will add up to give you total energy? So just add up the two graphs and the addition should give you the graph for total energy. Which color should I go for? Yellow. Mustard. So total energy is the sum of kinetic and potential. Draw करता हूं, check कर लो. Sum of kinetic and potential. So I've added up the black graph and the blue graph to get me the mustard graph. दोनों को add up कर दिया. The total energy which is constant, उसका graph आ गया. ठीक है, so the addition of the black graph and the blue graph. So guys, इससे total energy का भी formula आ जाएगा. Look carefully. Total energy किस point से pass कर रही है? It's the same point. Half m omega square x naught square. So इसका मतलब है total energy का भी formula आ गया. थोड़ा सा zoom out कर दो. So एक एक करके देखें, सारे आंसर्स आ गए. तो टोटल एनर्जी के साथ आई विल नाइदर मेंशन कांस्टेंट. मैं जनरल फॉर्मूला भी नहीं लिख रहा, मैं मैक्सिमम भी नहीं लिख रहा. द फैक्ट दैट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इसका एक ही रिजल्ट होगा. सो देयर इज नो मैक्सिमम एंड देयर इज नो जनरल फॉर्मूला. इट्स जस्ट वन फॉर्मूला फिट्स ऑल वाली बात है. सो द मस्टर्ड कलर ग्राफ which is a horizontal line is the graph for total energy. Since total energy is constant, therefore the graph is a horizontal line. And from the mustard graph, we can visualize कि मैंने जो वैल्यू लिखी है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. इब्राहिम ने पूछा आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड विद द टोटल एनर्जी वन. ओके इब्राहिम, मैं तुम्हें पॉइंट बाय पॉइंट बता देता हूँ. सो इब्राहिम, मैं एक एक पॉइंट तुम्हारे लिए मार्क करता जा रहा हूँ. मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ. कैन यू सी ब्लैक ग्राफ इज 0 एंड द ब्लू ग्राफ इज एट इट्स मैक्सिमम. तो 0 के साथ अगर तुम मैक्सिमम वैल्यू को ऐड करोगे तो wouldn't you agree the mustard graph will remain at the horizontal line? So one value is 0, Ibrahim. The other value is maximum. So 0 plus 10 gives you 10. इस तरह सोच लो. So 0 plus 10 gives you 10. So that explains why the graph of total energy passes through that one point. एक point ये हो गया. अब किसी और point को check करो. Black is maximum. Blue is 0. So Ibrahim, black maximum, blue 0. Add up the two values. So 0 plus maximum again leads you to a maximum value. So that explains why the mustard colored line continues horizontally. अब तीसरा point देख लो. Blue is maximum, black is 0. So again, maximum plus 0 should give you maximum. So that explains why the graph of total energy is passing through the highest point and is a horizontal line all the way throughout.
सो इब्राहिम भाई, सपोर्ट ओके यार, चलो कौन सा फॉर्मूला रह गया? एक फॉर्मूला रह गया। अब यार ये फॉर्मूले के लिए तो तुम लोग मेहनत करो, मैं हिंट दे देता हूँ। आई थिंक यू वुड अग्री if I'll write down this. To obtain the general formula for potential energy, see if that makes sense to you. From total energy, let's subtract the general formula for kinetic. If you guys are wondering कि sir subtraction का क्यों कह रहे हैं, तो guys total is sum of kinetic and potential. So if this statement makes some sense to you, then I'm sure you would agree that to obtain the general formula for potential, it should be total minus the general formula for kinetic. है ना? So kinetic and potential gives you total. So अगर potential का general formula निकालने का शौक है, तो total में से kinetic का formula minus करो। अब मुझे लगता है minus मुझसे ही करवाओगे तुम लोग, so मैं ही कर देता हूँ। But if somebody has a pen or a pencil, तो जरा तुम लोग खुद भी माइनस करना स्टार्ट करो। ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा ताकि आपको ऊपर वाले आंसर्स भी नजर आ जाएं। अब ये बहुत छोटा छोटा नजर आ रहा होगा आपको। मुझे कौन से वाले आंसर्स यूज करने हैं ना, वो मैं भी आपको शो कर देता हूँ, सो डोंट वरी। मैं खुद अपने लिए ढूंढ रहा था आंसर्स। कमिंग बैक टू द यूजुअल स्क्रीन साइज, anybody who wants to do the working, this is total. Let me write this down. The good thing is derivations नहीं है, so you can directly remember the answers. So अभी मैं नंबरिंग कर दूंगा, 1 2 3 4 किया था ना, सबकी नंबरिंग कर दूंगा। सो ये तो टोटल हो गया भाई, ये मैंने लिख भी दिया ऊपर, ये मैंने लिख दिया है, माइनस। अब you guys will have to trust me for kinetic का general formula. I'll write it down, but I'll show it to you as well. पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको क्विकली शो भी कर देता हूँ। तो आप पहले देख लें इस फॉर्मूले को जो मैंने लिखा है, एंड I'll just confirm this answer. Give me a second, फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है भाई, खुश हैं आप? तो मैं ऊपर ऊपर से फॉर्मूलाज ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा हूँ आपके लिए, अभी लेबलिंग कर दूंगा। So just give me a second. So पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूले का आंसर ये पहले लिख लूं, सिंप्लीफाई प्लीज आप मेंटली कर लो, और अगर नहीं करना तो मुझे ट्रस्ट कर लो। अनफॉर्चुनेटली ये फॉर्मूलाज मिक्स एंड मैच बहुत कर देते हैं स्टूडेंट्स, सो मैं इन सबको अलग से लिख दूंगा, डोंट वरी। बट फॉर द टाइम बीइंग
मेरे पास क्या-क्या आंसर्स आ गए हैं, मैं आपको सारे के सारे शो करता जा रहा हूँ। मैंने शुरू में ही लिख दिया है डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, तो प्लीज़ फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सब कौन से आंसर्स आ गए? जनरल फ़ॉर्मूला फॉर काइनेटिक, ठीक है? ये फ़ॉर्मूला नंबर 9 था। फ़ॉर्मूला फॉर मैक्सिमम काइनेटिक, ठीक है, ये भी हो गया। ये फ़ॉर्मूला नंबर 10 था। इसके बाद all the graphs, kinetic is the black one, potential is the blue one, and total energy, which is the sum of the two, is the mustard one. उसके बाद formula number 11, general formula for potential. So, Haris, तुमने लिखा हुआ था, can you show the general formula for potential again? So that should be appearing in front of you right now. और अनुषे अभी आंसर दे रहा हूँ आपके क्वेश्चन का. So ये 11th हो गया. फिर formula for maximum potential. ये 12th हो गया. अगर मैंने नंबरिंग में कहीं काउंट लूज कर दिया हो ना तो प्लीज मुझे बता देना. आई थॉट पहले 10 हो गए थे, सो हेंस मैंने 11 कर दिया, ये 12 कर दिया. अब टोटल एनर्जी, इसका एक ही फॉर्मूला है, बिकॉज टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट. सो ये 13th. अभी आप सुकून का सांस मत लीजिएगा, अभी थोड़ी और भी कहानी है. ठीक है, अनुषे ने पूछा है, डू वी हैव टू लर्न ऑल द ग्राफ्स? अनुषे, लर्न का मैं तुम्हें एक आंसर दे देता हूँ. अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया. सो गाइज, ये काफी लोग पूछते हैं कि सर हमें ग्राफ्स लर्न करने हैं या नहीं करने हैं. अब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि मुझे क्यों लर्न करने में सेंस नहीं समझ में आता. मैं आपको रीजन दे रहा हूँ, केयरफुली सुनिएगा. सपोज करें कि एग्जाम में अगर आपको ये कहा जाए, दिस इज एन एक्सेलेंट एग्जांपल विच विल प्रोबब्ली लेट यू अप्रिशिएट कि मैं लर्निंग ग्राफ्स को क्यों थोड़ा सा डिस्करेज करता हूँ. सो आई थिंक अनुषे को भी आंसर मिल जाएगा, आप लोगों को भी एक रीजनिंग मिल जाएगी. केयरफुली सुनिएगा. द डायग्राम शोज a pendulum starting from its mean position. ठीक है, so at t is equal to 0, it is at its mean position. Sketch graph of kinetic energy versus time. I'm sure almost everyone would agree कि वर्टिकल एक्सिस पे अगर काइनेटिक एनर्जी हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर टाइम हो. पहले देखिएगा मैं टाइम को लेबल कैसे कर रहा हूं. मैंने टाइम को 0 कर दिया, क्वार्टर ऑफ अ टाइम पीरियड,
half the time period. Oscillation की terms में सोचिएगा, quarter, half, 3/4 and 1 full time period. अब जब मैं ग्राफ बनाता हूँ ना, almost everybody kind of agrees कि 0 वाली पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई. Quarter of a time period later, it should reach its extreme position. तो extreme position का मतलब है kinetic energy will be 0. Half the time period पे, think of an oscillating pendulum. Half the time period पे it will again reach its mean position. है ना? Quarter पे it will go to one extreme position. Draw भी कर देता हूँ. So quarter के ऊपर it goes to one extreme position. ये quarter आ गया. Half the time period पे it returns back to its mean position. Then 3/4 पे it goes to the other extreme position, and so on and so forth. Na? So quarter, half, 3/4 and so on and so forth. मैं draw करता हूँ. Check कीजिएगा if that makes sense. अनुषे को फिर मुझे question का answer देना थोड़ा आसान हो जाएगा. So half the time period पे it returns back to the mean position. Three-quarters पे it goes to the other extreme position. And one full time period पे comes back to the mean position. So I'm sure most of you would agree कि kinetic energy का ग्राफ ये बनना चाहिए. And that sounds about right. बिल्कुल सही लग रहा है. So अगर मैं ये question लिखता that it is starting from its mean position, then surely the graph which I've constructed is perfectly correct. Now on the same axis, if I would have asked you potential बनाओ, आप flip कर दोगे. If I would have asked you total energy बनाओ, आप flat line बना देते. So potential को आप उल्टा कर देते, flip कर देते. मैं draw भी करके दिखाता हूँ. Potential would have been the exact reverse. I don't need it, तो मैं erase कर दूंगा, but this is how it would have been. And total energy would have been a flat line. This is how it should have been. And so on and so forth. Now, imagine if इसी question के अंदर ये लिखा होता. The diagram shows it's almost an identical question. A pendulum starting from its extreme position. Those of you who are intelligent enough, they would realize कि मैं किस चीज की तरफ refer कर रहा हूँ. पहले it was starting from its mean position. ठीक है, and this was the diagram. Now it is starting from its extreme position. So diagrammatically, this is the starting point. So if I now ask you, भाई, graph कैसे बनेगा? So can you all appreciate ग्राफ को लर्न करने का तो बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि ग्राफ तो चेंज हो जाएगा. अब चेंज ये होगा, previously the graph was starting from its maximum position, and this time you will all appreciate the graph is going to start from 0.
तो प्लीज चेक कीजिएगा। ग्राफ को लर्न करना डजंट रियली मेक मच सेंस, इसलिए याद करने का फायदा नहीं है। बिकॉज ऑल दे नीड टू डू इज, दे ऑल्सो नो कि तुम लोगों को याद करने की काइंड ऑफ एक हैबिट होती है। एग्जामिनर को बस इतना करना है कि उसको अपने रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर देना है और ग्राफ का पूरा शेप चेंज हो जाता है। लाइक इन दिस केस नाउ, कैन यू रियलाइज आपका ग्राफ इस तरह बनेगा कि जीरो पर इट स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजिशन पे रेस्ट पर होगा ना, फिर जब सेंटर में आएगा, when the time will be a quarter of an oscillation, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अब पूरा ग्राफ फ्लिप हो गया है। And then if you proceed on, you can clearly see that it doesn't really help you much to learn the graph by heart. Rather, look at the situation, and based on that, then you can decide कि कौन सा ग्राफ बनेगा. So both graphs are for kinetic energy, but they appear to be the exact reversal of each other. है ना? तो है तो दोनों काइनेटिक एनर्जी के, लेकिन बिल्कुल ही रिवर्स बने हुए हैं. And the only reason why both graphs are the exact reverse of each other is simply because of the fact that the reference point was changed. So hence, my strong suggestion would be कि यार formulas learn तो करना आपकी मजबूरी है, वो जरूर याद रख लीजिएगा. ग्राफ्स बिल्कुल भी याद मत रखिएगा. सिचुएशन को रीड करके फिर डिसाइड कीजिएगा what makes more sense. So for mean position, the graph is completely different as compared to for extreme position. So rather than learning them, analyze the situation and then respond accordingly. हाँ फैज, खरीद लो. It's a decent book if you want to buy it. There is a new edition. I don't know whether that new edition is in the market. So खरीदने से पहले एडिशन चेक कर लेना. पहले मुझसे एडिशन कंफर्म करवा लेना, फिर खरीद लेना. All right guys, further आगे कुछ और formulas हैं. So let me just check which number did I stop at. Okay, so I stopped at formula number 13. Fair enough. और अब कितने जज्बा है आपके अंदर वो देख लेते हैं. जब बिल्कुल मरने लगो तो बता देना कि सर बस, तो फिर मैं रुक जाऊंगा. अभी थोड़े से और फॉर्मूलाज हैं. सो अगला फॉर्मूला, expression for calculating the time period अच्छा वैसे you wouldn't believe this, ये जो आप लोग ए लेवल्स के सेकेंड ईयर में पढ़ते हो, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी ये क्लास 10th के अंदर मैट्रिक में पढ़ाया जाता है. सो आई थिंक दिस शुड गिव यू अ क्लियर आइडिया उन बेचारों की रट्टों की आदत क्यों इतनी ज्यादा लगी हुई होती है. Every formula that we have done so far, उसकी derivation is a part of their syllabus, and they do this in class 10 metric के अंदर. You know, imagine class 11 से भी एक साल पहले, तुम लोगों से 3 साल ahead वो लोग ये काम करते हैं with all the derivations. इसीलिए उन बेचारों को आता वाता कुछ नहीं है. क्योंकि यार मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि how in the world that teacher in class 10th can make a kid understand all these things. तो syllabus तो बना दिया उन लोगों ने. The mental capacity of the kids at that level of class 10th, remember what you people used to study in class 10th. Weight is equal to mg. G is called acceleration due to gravity. और you know light में principal axis होता है, optical center होता है, a focal point होता है. Literally तुम लोग ये सारा काम करते हो class 10th में, if I'm not mistaken.
और वो बेचारे ये कर रहे होते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। सो यार उनका कोर्स जो है ना नकवी, बहुत अच्छा कोर्स है। इट इज जस्ट दैट इट इज नॉट मेंट फॉर दैट लेवल टू बी टॉट। सो दे हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग दैट दे कैन थिंक ऑफ। उन्होंने उनके उनकी उनके जिस किसी ने भी कोर्स डिजाइन किया है, आई थिंक उन्होंने बहुत सारी बुक्स निकाली होंगी, हर बुक में से हर चीज निकाली होगी, और वो सारी की सारी कंप्रेस करके इनके सिलेबस में डाल दी। और मुझे लगता है उसको बच्चों से दुश्मनी थी, तो अब वो पता नहीं कैसे पढ़ते होंगे। बट द गुड थिंग इज उनके एग्जाम में इतनी सारी चीजें पूछी नहीं जाती। सो वो उनके 4-5 सालों के ही मेरा ख्याल है कुछ पेपर्स होते हैं, और बस वही पूछते हैं उनसे। बट है ये सब कुछ। एनीवे, सो एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी फॉर अ पेंडुलम सिस्टम। सो यार अगर आप स्ट्रक्चरली देखो ना, मैंने क्या क्या चीजें कराई हैं बिल्कुल बिगनिंग से, आई थिंक यू कैन अप्रिशिएट। हमने पहले हर चीज एक सीक्वेंस में चल रही है। मे बी यू कैन अप्रिशिएट द सीक्वेंस। हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन करी, हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन करी, वेलोसिटी की करी, एक्सेलरेशन की करी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। फिर इसके बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी। और अब फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड एंड फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो हाउ कैन वी कैलकुलेट टाइम पीरियड, हाउ कैन वी कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी? So again, for an oscillating pendulum, इसकी भी derivation is not a part of your syllabus. मैं लिखता जा रहा हूँ जहां जहां पर भी मुझे चांस मिलता है। So the formula for the time period is written as follows. So L denotes the length, and G denotes the acceleration of free fall. And if you are interested in obtaining the formula for the frequency, so guys, frequency will be F is equal to 1 upon T now. So just flip the time period wala formula to get the answer for frequency. So try to remember one, and the other one can be worked out. So if you have the result for the time period, frequency will be the reciprocal of that. तो यार ये रिजल्ट आ जाएगा। मुझे याद नहीं है, मैंने फॉर्मूला नंबर 13 पे स्टॉप किया था। कैन एनीबडी जस्ट गाइड मी यार? सो इफ दैट वाज द केस ना, 13 था। आई थिंक फॉर्मूलाज तो सारे लर्न करने पड़ेंगे। हाँ इब्राहिम, ये 14th है, ये 15th है। मैं नेक्स्ट क्लास में इब्राहिम ये कर दूंगा कि जब इन सारे फॉर्मूलाज को दोबारा लिखूंगा ना, ताकि एटलीस्ट आपको एक हैबिट बन जाए लर्न करने की, तो मैं मेंशन कर दूंगा which ones are the more frequently used formulas in your papers. So there are certain formulas that they very occasionally
आस्क यू, और फिर कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, एवरी सेकेंड ईयर आते हैं। तो जो बहुत दफा रिपीटेड फॉर्मूलाज होते हैं ना, उनको फिर मैं हाईलाइट वगैरह कुछ कर दूंगा। जस्ट रिमाइंड मी इन द नेक्स्ट क्लास टू डू दैट। मूविंग ऑन फर्दर। एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग, आज मैं चाह रहा हूँ करा ही दो ना सारे फॉर्मूलाज यार, 5 मिनट और लगेंगे, ठीक है, जस्ट बेयर विथ मी। एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द टाइम पीरियड and frequency for a mass m attached to a spring performing simple harmonic motion. So imagine there is a mass m attached to a spring, and the spring is performing oscillations. So in the previous diagram, it was the pendulum oscillating. And these were the formulas for the time period and the frequency. And this time around, it's a mass connected to a spring, and this is made to oscillate. तो इसके लिए क्या results आएंगे? So guys, the time period is given by these two formulas. तो डू रिमाइंड मी, मैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर लिख तो दूंगा सारे के सारे वापस, बट ये मेंशन कर दूंगा कि कौन से वाले फॉर्मूलाज ज्यादा फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आते हैं। So these are the two formulas for calculating the time period. Symbols जरा प्लीज देख लेना, मैं मेंशन भी कर देता हूं। So m is the mass of the object, k is, ये आपने as में किया था ना, spring constant, e is the extension of the spring, and the g of course is gravitational field strength. तो टाइम पीरियड के बेटा रिजल्ट्स तो मैंने लिख लिए। फ्रीक्वेंसी के लिए अगेन नो नीड टू रिमेंबर द रिजल्ट, इन रिजल्ट्स को फ्लिप कर देना, सो उल्टा कर देना। देखने में रिजल्ट ज्यादा लग रहे हैं, यू नो काफी सारे रिजल्ट सिमिलर भी हैं, काफी सारे रिजल्ट्स एक दूसरे को फ्लिप करके भी आते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो रियल टर्म में शायद थोड़े से कम हो जाएंगे। इफ आई वर टू फ्लिप द रिजल्ट्स ना, तो ये मेरे पास एक रिजल्ट आ जाएगा, और ये दूसरा आ जाएगा। सिंस मैंने सारे के सारे रिजल्ट्स को अलग अलग लेबल किया है ना, तो जाहिर है आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि बहुत सारे हैं। अब टेक्निकली स्पीकिंग अगर टाइम पीरियड याद है,
सो ज़ाहिर है फिर फ्रीक्वेंसी लर्न करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट नॉनदलेस आई हैव रिटन देम सेपरेटली ना, सो वो काउंटिंग में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और बस दीज़ विल बी 14 एंड 15। सो मैंने कहीं गलत लिखा है? हमज़ा लेट मी चेक। ओके हमज़ा सही है। तुमने आई थिंक वो पुराने वाले स्टेटमेंट के बारे में बोला था, लास्ट रिजल्ट और फिर खुदाफिज खेलते हैं। बस 2 रिजल्ट्स हैं, क्विकली हो जाएगा। सो अगेन एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग टाइम पीरियड and frequency of a double spring system performing simple harmonic motion. तो अगेन गाइस, कहने को तो ये होगा कि यार ये तो और भी फॉर्मूलाज आ गए, बट व्हेन यू विल लुक एट दिस फॉर्मूला एंड यू विल कंपेयर इट विद द प्रीवियस वंस, यू विल सी कि ये कोई सेपरेट रिजल्ट्स नहीं है, प्रीवियस रिजल्ट्स का काइंड ऑफ एक्सटेंशन है। तो देखने में आपको ज्यादा लग रहे हैं माइंड यू, लेकिन इन रियलिटी इतने सारे भी नहीं है। सो द मास इज मेड टू ऑसिलेट। अब प्रीवियस फॉर्मूला आप देखो, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, और डबल स्प्रिंग सिस्टम का फॉर्मूला जब मैं लिखूं तो आप चेक कर लीजिएगा, लिटरली देयर इज नो डिफरेंस। जिसको मैंने सर्कल किया है ना वो देखिएगा। कोई डिफरेंस रिकग्नाइज हो रहा है तो प्लीज देख के बता दें। आई एम श्योर फर्क तो नजर आ रहा होगा ना। और फर्क ये है कि सिंगल स्प्रिंग में के था, सिंगल स्प्रिंग में के था, डबल स्प्रिंग के अंदर 2K आ गया। तो टेक्निकली एज ए सेट कहने को तो बिल्कुल अलग फॉर्मूला बन जाता है, बट कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वन लीड्स टू द अदर वन। तो एक सीक्वेंस काइंड ऑफ बिल्डअप हो ही जाता है। एंड लाइकवाइज फ्रीक्वेंसी का आंसर आप बता दें, फिर मैं कंक्लूड करता हूं। सो 2 पाई विल बिकम 1/2 पाई, and inside the under root function this will be the result. So अब अगली वाली एक क्लास तो मैं ऑनलाइन ही लूंगा, यानी कि ट्यूसडे वाली क्लास, क्योंकि ट्यूसडे वाली क्लास में मुझे वैसे ही इन सारे फॉर्मूलाज के क्वेश्चंस कराने हैं। सो वो तो मैं ऑनलाइन लूंगा। फिर कमिंग सैटरडे से तुम लोग जो भी डिसाइड करके मुझे बता दोगे ना, उसके हिसाब से आई विल प्रोसीड। आई वुड प्रेफर टू हैव फिजिकल क्लासेस, बट इफ मोस्ट ऑफ यू वुड से ऑनलाइन तो फिर मैं ऑनलाइन रखूंगा, बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट अगर फिजिकल हो सके तो कर लीजिएगा। सो ट्यूसडे को तो मैं ऑनलाइन ही रखूंगा, बिकॉज ट्यूसडे के दिन तो मुझे अब पढ़ाने के बजाय ये जो इतनी सारी कहानियां हैं इन सारे फॉर्मूलाज की ना, इन सबको अप्लाई करना है। सो ट्यूसडे वाला तो पूरी की पूरी क्लास हमें वैरायटी ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस करने हैं, इस चीज के अलग अलग सर्कमस्टांसिस के क्वेश्चंस के एग्जांपल्स करने हैं। तो उसके लिए तो यू डोंट नीड टू बी टेक्निकली इन पर्सन, वो तो ऑनलाइन ही ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा। बट फिर कमिंग सैटरडे से तब तक जस्ट गिव मी अ क्लियर आइडिया एज टू हाउ वी नीड टू प्रोसीड। अच्छा गाइज, आज का लेक्चर एक अहमद ने किया था, अस्मा ने आई गेस किया था,
अस्मा आप डाल दोगे ना गूगल क्लासरूम पे बेटा इफ पॉसिबल, और आई थिंक अदरवाइज रूहुल्ला आप डाल दीजिएगा, किसी को भी अगर टाइम मिल जाए तो। मैं लेक्चर नंदलेस अभी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इब्राहिम ने लिखा है देयर इज नो ई अपॉन जी वाला फॉर्मूला इन दिस वन। यस, देयर इज नो ई अपॉन जी वाला फॉर्मूला इन दिस वन। ओके बासिम, मैं देख लेता हूँ यार। अभी फिलहाल तो ट्यूसडे को ऑनलाइन लूंगा, फिर बाय सैटरडे आई गेस यू गाइस विल बी इन अ गुड पोजीशन टू जस्ट गिव मी अ बेटर आइडिया कि क्या करना है। ठीक है गाइस, कंक्लूड करता हूँ हाँ?